हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके शॉर्ट हैंड प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, हम करने जा रहे हैं शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 22 फ्रॉम द मैगजीन स्पीडोग्राफी बाय डॉक्टर जी.डी बिस्ट वॉल्यूम 1। सो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सर, कॉमा, इसको हम लिखेंगे सर, कॉमा, द ऑनेबल मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द बिल, द ऑनेबल मिनिस्टर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑनेबल मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द बिल has made it quite clear, it quite के साथ ही फ्रेंड्स हम इकट्ठा लिखेंगे clear, that this bill is virtually, this bill that this bill को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, that this bill is virtually an integration of, is virtually इस तरीके से, virtually an integration of two other enactments that existed before, that existed before, full stop. There has not been any basic, इकट्ठा लिखेंगे इसको हम, there has not been, इस तरीके से, any basic departure, any आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे एक छोटा सा बॉबल लगा सकते हैं आप, ठीक है। बेसिक डिपार्चर, बेसिक डिपार्चर फ्रॉम द पॉलिसी लेड डाउन, डिपार्चर फ्रॉम द पॉलिसी लेड डाउन इकट्ठा लिखेंगे इस तरीके से, by his predecessors and as such this bill cannot, and as such इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स। एंड एज इस तरीके से, एंड एज इकट्ठा, सच अलग, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एंड एज सच दिस बिल कैनॉट ऑफर एनी, दिस बिल कैनॉट ऑफर एनी सब्सटेंशियल रेमेडी, एनी सब्सटेंशियल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सब्सटेंशियल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सब्सटेंशियल रेमेडी, फुल स्टॉप। नाउ द टी इंडस्ट्री को हम इस तरीके से लिखेंगे, तरीका ये भी होता है बट हम इस तरीके से लिखेंगे शॉर्टन वे में। इंडस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री फ्रॉम, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकट्ठा लिख लेंगे, यहाँ अलग अलग इस तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट इस तरीके से, इंडस्ट्री फ्रॉम वट एवर एंगल, इंडस्ट्री फ्रॉम वट एवर एंगल इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, वट एवर एंगल you may judge it, full stop. If you look, इकट्ठा लिखेंगे, at our export trade, comma, this accounts for a large part of our foreign
earning foreign earning, full stop. Next, if you look at our labor tea industry, if you look at our लेबर, ये लेबरर हो गया, लेबर हम इस तरीके से डालेंगे, लेबर टी इंडस्ट्री को इस तरीके से लिखेंगे, काउंट्स फॉर अ मिलियन ऑफ लेबर, काउंट्स फॉर अ मिलियन ऑफ लेबर, full stop. If you look at it from the point of view, if you look at it from the point of view, at it from the point of view, इकट्ठा लिखेंगे, of our national health, of our national health, comma, it also accounts, comma, it also accounts, इस तरीके से accounts for a large part of our foreign earning, for a large part of, यहाँ if you look at point of view, it also accounts for, it also accounts for, नहीं friends, ये है, it also accounts for a substantial, for a substantial हम short लिखेंगे इस तरीके से, substantial portion of our national wealth, of our national wealth, full stop. Now comma tea industry, now comma tea industry, comma has been pointed out by the, comma has been pointed out by the previous speaker here, previous speaker here, comma is under the domination, comma is under the domination of the British, and this fact has also, of the British, and this fact has also been accepted, has also been accepted by my honorable friend इस तरीके से बनाएंगे, honorable friend इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, honorable friend on the other side of the house, on the other side of the house इस तरीके से लिख सकते हैं इसके साथ ही, of the house, who just finished his speech, who just finished his speech, full stop, paragraph change. His friends ये लिखेंगे on the line, ठीक है. Now comma one has, now comma one has, to follow the logic of ones, to follow the logic को अच्छे से बनाएंगे इस तरीके से, logic of one's argument, of one's argument, full stop. The tea industry has been deliberately हम लिखेंगे इस तरीके से, deliberately kept in the hands of the British, and they have not, of the British, and they इकट्ठा have not, and they have not, ये भी हम इकट्ठा लिख सकते हैं पूरा, shown any intention, इस तरीके से ये बन गया हमारा shown any intention whatsoever to help the Indian interests, whatsoever to help the Indian interests, as we आएगा लास्ट में, full stop. You know it very well that you
नो इट वेरी वेल, इस तरीके से लिखेंगे हम, वेरी वेल इस तरीके से लिखेंगे, और ये वेल का हम ये साउंड बना देंगे यहाँ से, एक ये तरीका है, और एक है वेरी वेल, अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। वेरी वेल दैट हेयर वी हैव इंडियन इंटरेस्ट, दैट हेयर वी हैव इंडियन इंटरेस्ट, इसको ऊपर करेंगे, वी हैव इंडियन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऐसे भी आएगा फ्रेंड्स साथ में, इंडियन इंटरेस्ट ऑन द वन हैंड एंड द ब्रिटिश इंटरेस्ट ऑन द वन हैंड एंड द ब्रिटिश इंटरेस्ट on the other, full stop. The point about such interests, the point about such interests should not be dismissed, should not be dismissed, in that dismissed, in that dismissed, in that cynical, in that cynical हम बनाएंगे cynical, in that cynical fashion in which it has been dispensed, in which it has been dispensed, इसको हम लिखेंगे dispensed with by the honorable minister, with by the honorable minister इकट्ठा बना लेंगे, full stop, paragraph change. लास्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स हमारे पास, now at times we find, now at times we find, he becomes somewhat eloquent in speeches, and uses certain bitter terms against the British, bitter terms against the British, full stop. It may be necessary for a minister, it may be necessary for a minister to do so, because after all one has to, return to the house of people, and the tenure को हम इस तरीके से लिखेंगे फ्रेंड्स, एन की जो स्ट्रोक है उसको हम लंबा खींच देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये बन गया टेन्यूअर। एक अदर वे हो रहा है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टेन्यूअर नीचे को आर डाल देना है, ठीक है फ्रेंड्स, टेन्यूअर इज ओनली 5 years and 1 year, इज ओनली 5 years and 1 year is gone, and 1 year is gone को इस तरीके से डाल दीजिए फ्रेंड, gone already, full stop, नेक्स्ट है, बट वी वुड लाइक द ऑनरेबल मिनिस्टर, बट वी वुड लाइक द ऑनरेबल मिनिस्टर also to balance his words by some action, words by some को इकट्ठा भी लिख सकते हैं हम इस तरीके से, by some words by some action, इस तरीके से, full stop, after all an, full stop, after all an, ठीक है फ्रेंड, and after all an ounce of action, ठीक है, after all an इस तरीके से, ounce of action is better than a ton, is better than above the line, better than को इकट्ठा भी लिख सकते हैं हम इस तरीके से, better than, ठीक है, मच का बबल आएगा, ton of praises on the line, praises इस तरीके से, and speeches, full stop. It has been given to him to change, it has been given to him इकट्ठा लिख लेंगे, to change certain things, full stop. He said that he did not suffer, he said that he did not
suffer from want of power, from want of power, full stop. He has plenty of power. He has इकट्ठा भी लिख सकते हैं, he has अलग अलग भी लिख सकते हैं, he has plenty of power, he has plenty of power. ठीक है, चाहे इस तरीके से लिखिए, चाहे पावर को इस तरीके से, फुल स्टॉप, क्लोज. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्पीडोग्राफी बाय डॉक्टर जी डी बिस्ट का ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 22. आई होप कि आपको ये ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से समझ आई होगी. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.